Hello everyone, welcome back to Fundamentals of Learning English Grammar. This is Dr. Maurya and we are today having tag question. Started we already gave an introduction to tag question in which I taught you anomalous finites. Anomalous finites are important to understand or to practice tag questions, and therefore I gave in introduction that there are 24 anomalous finites. They are very useful in this chapter. So let's have it. So this tag question is a name given by grammarian. A lot of people, lot of grammarians have different names to pronounce it. For example, tag question is also called tail question. It is called tail question. So tail question and disjunctive question, appended question. This is also called appended. Appended question. And disjunctive question. EFT put ln. Lot of grammarians they agree that this type of questions are very important so far as conversation is concerned. They also agree with this that 24 anomalous finites are very useful in this tag question. So the basic rule of the tag questions, there are two classes here, and two classes, the first and second class. For example, yes, two classes are there. For example, he is really brilliant. The standing rule is that in the he is brilliant. That is one clause. Second clause is tag question. Second clause will be tag question, tail question. He is brilliant. And then we say, isn't he? Isn't he? He is brilliant, isn't he? So the standing rule is that if the main clause is in positive, the tail will be in negative. And if it is positive, it will be negative. For example, if I write he is not brilliant, so tag it will be is he. So that standing rule is this, that if the first class is positive, tail will be negative. If the first class is negative, tail will be positive. So this is a standing rule, and this will work throughout these tag questions. Now we come to the tag question in detail. So let us see first the pronoun, whether the pronoun changes or in what way it changes. Let us see it. Pronoun. The rule says that yes,
The pronoun used in the first class, suppose this is first class and this is 10 question, right? So the pronoun used here will also work in the 10 question. Pronoun work here will be also be here in 10 question. Pronoun. So for example, they are busy. They are busy. Aren't they? They are busy, aren't they? So, if they is here, so they will be also here, right? If it is he will be there. They say, she is beautiful. She is beautiful. So, isn't she? Isn't she? So the pronoun will be the same in the first class as well as in the 12th question. Pronoun will be the same. Acha. Another rule, we go up. Yes. X. Acha. If a subject starts with anybody, if the subject start with anybody, anyone, everybody, somebody, nobody, इस तरह से everybody, anybody, somebody, anybody, somebody, or everybody, nobody, ऐसे nobody. So in tag, another pronoun will be used, and that pronoun will be they. 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 For example, nobody has ever seen that. Nobody has ever seen that. Nobody has ever seen that. Ever seen that. What would be the tag question? Nobody has ever seen that. Haven't they? Haven't they? See. So, if the pronoun starts with nobody, somebody, anybody, so the question tag will have they pronoun. They. जैसे somebody has nobody has ever seen that. Somebody has called them. Somebody has called them. क्या होगा? Haven't they? They will be used. अच्छा. Then again, if the pronoun starts with this is somebody, anybody, they pronoun will be added to tag question. They, right?
Then we have another rule. If the sentence start with anything, something, तो yes, maybe nothing, anything, something, anything, something, nothing, इससे अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो फिर इसका टैग क्या होगा? तो लेट अस सी, एवरीथिंग इज रेडी. सपोज आई से एवरीथिंग, एवरीथिंग भी लिख लो इधर, नथिंग, एवरीथिंग, सो एवरीथिंग, एवरीथिंग. तो इसका टैग जो होगा, इसका टैग का प्रोनाउन है, इसमें जो टैग का प्रोनाउन होगा वो क्या होना चाहिए? ये रूल के अनुसार इट शुड बी इट, इट शुड बी इट. तो फिर क्या होगा? जैसे एवरीथिंग इज रेडी नाउ. सपोज एग्जाम्पल में एवरीथिंग इज रेडी नाउ, एवरीथिंग इज रेडी नाउ. इस तो प्रोनाउन क्या होगा? इजंट. इजंट यहां पर इट होगा. एवरीथिंग इज रेडी नाउ, इजंट. समथिंग हैज बीन रॉन्ग, समथिंग हैज बीन रॉन्ग का क्या होगा? हैजंट इट. समथिंग हैज बीन रॉन्ग. तो nothing succeeds like success. See, nothing succeeds like success. So, is it? Everything, nothing is negative. So if here negative is there, positive will be there. Here positive is there, so negative will be there. So in this way, in this tag question, we use it as a pronoun. In the case the sentence begins with anything, something, nothing, everything. So we should do like this. Again, further we go. Yes. None of. If the sentence begins with none of, तो क्या होगा? If the sentence begins with none of, for example, none of the answers, none of them answered your question. None of them answered your question. None of them answered your question. अब इसका टैग में क्या होगा? कहाँ दीजिए? None of them answered your question. तो क्या होगा? देखो, ये आंसर जो है क्लियर पास्ट है, तो फिर इसमें हम किस चीज का प्रयोग करने जा रहे हैं? दे का प्रयोग करने जा रहे हैं. तो दे का प्रयोग करेंगे तो पास्ट टेंस में क्या होगा? डिड. तो इसका होगा डिड दे, डिड दे. द full sentence will be like this. None of them answered your question, did they? None of them answered your question, did they? None of them answered your question, did they? तो none of होगा तो they का प्रयोग कीजिए. According to tense will be, rule of tense will be the same. जैसे पहले था वैसे ही रूल होगा.
and then if it starts with the someone, some of us, some of us, for example, some of us wanted to consult a doctor. Some of us wanted to consult a doctor. तो अगर सेंटेंस begins with some of us या ऐसे होगा, some of us wanted to consult a doctor, to consult a doctor, comma. Then what will be the tag question? Some of us wanted to consult a doctor. तो didn't we, ये भी पास्ट टेंस में है, ये होगा didn't we, और इसके बाद ये हम भूल जा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपको देना पड़ा didn't we, क्योंकि because we asked some of us wanted to consult a doctor, didn't we? Some of us wanted to consult a doctor, didn't we? ऐसे बोलना है। तो some of us होगा तो आप जो है we लिखिएगा, और some of us have अगर होगा तो जैसे some of us have, some of us have been to that place. Some of us have been to that place. Some of us have been to that place. Haven't they? तब यहाँ पर जो है they का प्रयोग होगा, haven't they? Haven't they? Some of us. और अगर some of you होगा तब वहाँ पर क्या होगा? You होगा। Some of you से अगर सेंटेंस शुरू है तो टैग में क्या होगा? You होगा। और वन ऑफ यू में भी यही होगा, वन ऑफ यू में भी यू होगा, वन ऑफ यू, वन ऑफ यू में भी टैग क्वेश्चन क्या होगा? यू ही होगा। तो हम देखते हैं कि टैग क्वेश्चन इस तरह से चेंज करते हैं, और ये स्पेशली दिस इज यूज इन स्पोकन इंग्लिश। व्हेन वी स्पीक कन्वर्स in English, we use this kind of sentences and we ask question. Now let us see the statement का टेंस वही रहता है जो टैग का है, टेंस जो है वही रहेगा। जैसे they could work hard, तो ये पहला स्टेटमेंट है, इसका वही टेंस रहेगा जो टैग का। दे कुड वर्क हार्ड, तो इसका क्या होगा? कुडंट दे। तो आप यहाँ पर कुड है तो यहाँ पर भी कुड होगा। जैसे
you should stop talking. तो यहां पर क्या होगा? shouldn't you? तो टेंस नहीं बदलता, इसमें कोई जो फर्स्ट क्लास का टेंस है वही जो है आपको टैग का भी टेंस होगा, ये नहीं बदलता। अच्छा, और फिर हमने बता दिया प्रोनाउन। अच्छा, अगर प्रोनाउन प्रॉपर नाउन है तो उसके अनुसार हम टैग बदलते हैं। प्रॉपर नाउन है जैसे टीना इज ब्यूटीफुल। तो प्रोनाउन इसके अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? सी, टीना इज ब्यूटीफुल, इज सी। जैसे रवि इज नॉटी, तो isn't he नहीं। जैसे रवि एंड मोहन आर वर्किंग हार्ड अब जो है इसके अनुसार रवि और मोहन के अनुसार हमको इसको सेट करना है। आर वर्किंग आर दे तो इजिंट होता है और आर प्लस नॉट होता है, उसको बोलते हैं आंट। तो आंट दे, रवि एंड मोहन आर वर्किंग हार्ड, आंट दे, ऐसे। और अगर आई होगा तो क्या होगा? आई के साथ अगर निगेटिव में टैग क्वेश्चन होगा तो एमेंट नहीं होता, आंट होता है। जैसे आई एम टॉल, आई एम टॉल, ठीक। अब इसका क्या होगा? आपको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एम आई नॉट, तो एम आई नॉट नहीं होता, एम आई नॉट ये नहीं होता। इसके जगह पर लिखते हैं आंट आई, आंट आई, ये सही है, दिस इज करेक्ट। ये पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में। आई एम टॉल, एमेंट नहीं, ऐसा नहीं होता, आंट आई, ये सही है। अगर इफ दिस इज निगेटिव तब वो एम का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट टॉल, आई एम नॉट टॉल, देन टैग क्वेश्चन विल बी क्या? एम आई, ये। लेकिन नेगेटिव में वो एम आई की जगह आंट आई लिखा जाता है। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल टुडे, वन लेक्चर मोर फॉर दैट टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चंस आर नोन by different names. I tell different grammarians have given different names in tag questions. So it is especially used for conversation, it's a part of spoken English, but in a grammar, so far as some correction, some common errors comes like this,
I am tall, I am tall, amn't I? तो amn't I is wrong. I होना चाहिए and I am not tall, तो ये होगा am I. This is correct. तो this is all for today. Tomorrow one lecture more, and then this will be finished. Till then, goodbye. Thank you.